I'm Sapna Mudgal. I'm back with few important questions of chemical kinetics. Again, we will discuss these questions your topic wise, and I hope all of you will able to understand the entire chapter with the help of these questions. So, let's begin with chemical kinetics. First is, as the chemical kinetics, all of you know that it is a branch of the science which deals with the rates of chemical reactions, factors affecting rate of chemical reactions. So, first question is, what do you understand by rate of reaction? All of us know that in a chemical process or reaction, reactants are converted into products. Reactants are converted into product, and as the reaction progresses, concentration of a reactant gradually decreases with the passage of time. Concentration, if we talk about this, that rate of a reaction, concentration if we plot a graph between concentration of a reactant and time, then concentration of a reactant gradually decreases with time. And if we plot a graph between concentration of a product and time, then concentration of a product with gradually increases. So, rate can be expressed in terms of concentration of reactants, in terms of products. So, rate is defined as change in concentration of a reactant or product per unit time taken. So, it is defined as change in concentration of a reactant or product per unit time. In case of reactants, the rate is expressed as rate is equals to minus delta R upon delta T, and in case of products it is expressed as delta P upon delta T. Sometimes it is asked that why do we put negative sign in expression of rate expression when it is expressed in terms of reactant. The reason is change in concentration. Change in concentration means minus delta R means final concentration of reactant minus initial concentration of reactant, and since final concentration is lesser than initial concentration, so difference of 2 is negative and rate cannot be negative. That is why we put negative sign in expression of rate of reaction in terms of reactant. तो जब भी reactant की terms में करेंगे तो we put negative sign, क्योंकि rate cannot be negative, it is always positive. किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें? In a reaction 2A gives product, concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.3 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. So you can see that here 2A is changing into product. इसका कोफिशिएंट क्या है? 2. तो हमारा जो रेट एक्सप्रेशन होगा, rate expression is equal to minus delta A upon 2 delta T. जब हम रेट, अगर कोई रिएक्शन है जिसमें डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, तो जब रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को दैट इज डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट. तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो हमने रेट का एक्सप्रेशन 2A, अगेन दिस इज माइनस final concentration delta T, 2 delta T. So final concentration is 0.3
initial concentration is 0.5 and time taken is 10 minutes. So it comes out minus minus plus 0.2 upon 2 into 10 to the 2 into 10. So it's 2 से 2 cancel. This is 10. So it is 1 upon 100. 1 upon 100 means 1 into 10 to the power minus 2 mole per liter per minute. Because time is in meter. कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर और मोल पर लीटर पर मिनट. दिस वे यू कैन सॉल्व इट. नेक्स्ट, A plus 2B gives 3C plus 2D. The rate of disappearance of B is 1 into 10 to the power minus 2 mole per liter per second. What will be the rate of a reaction, rate of formation of C? So A plus 2B, here they have given us rate of disappearance of B. Rate of disappearance of B is minus delta B upon delta T. बेटे डिसअपीरेंस या फॉर्मेशन में कोफिशिएंट का रोल नहीं है, केवल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन है. और जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे ए की टर्म्स में करें, बी की, सी की, डी की, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा. सो रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ बी इज 1 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन in terms of B will be minus delta B upon 2 delta T. So we have value of minus delta B and delta T, that is 1. So 1 upon 2 into 10 to the power minus 2. It is 0.5 into 10 to the power minus 2, or we can write 5 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. ये आ गई रेट ऑफ रिएक्शन. थर्ड इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी. अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. बट हमें सी की कॉन्सेंट्रेशन गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस केस में? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ सी. इन टर्म्स ऑफ सी, सी का कोफिशिएंट क्या है? 3. तो इन टर्म्स ऑफ सी वी राइट डेल्टा सी अपॉन 3 डेल्टा टी. This expression is rate of formation of C. So rate of formation of C is equal to 3 into rate of reaction, and that is 3 into 5 into 10 to the power minus 3. So it comes out 15 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, or 1.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. I hope this concept is clear कि जब हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीरेंस लिखना है तब कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, बट जब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीरेंस को हमें उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है. एंड रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम वेदर इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ important one, what is rate law? Sometimes we observe that rate expression which we determine experimentally is different from the rate expression given theoretically. So what is rate law? Rate law is experimentally determined rate expression, in terms of
in terms of reactants is called rate law. Is called rate law. Means जहाँ भी rate law आ गया है वो क्या है? Rate law is experimentally determined rate expression. Next, write differences between order and molecularity of a reaction. Very important. Order of reaction and molecularity of a reaction. Order of reaction, molecularity of a reaction. Order क्या होता है बेटा? What is order of a reaction? It is the sum of powers or exponents raised to concentration terms in rate law expression. Whenever we write rate law, for example, rate law is k a to the power 2 b to the power 1. So what is order? Order is represented by symbol order n equals to 2 plus 1 equals to 3. So it is, we can say the reaction is second order with respect to A and first order with respect to B. So it is the sum of powers or exponents raised to concentration terms in rate law expression. Second point, order is determined experimentally. क्यों? क्योंकि order is determined experimentally because order is determined with the help of rate law, and rate law is rate expression which is determined experimentally. So we have written order is determined. So we have written order is determined experimentally. Third, it can be zero or fractional. It can be zero or fractional, and for elementary reaction, for we can say complex reaction. For complex reaction, order of reaction, for complex reaction, order of reaction is determined by slowest step of reaction. Slowest step of reaction means what is complex reaction? Reaction which takes place in 2 or more steps. That is reaction, and when reaction takes place in 2 or more 2 steps, then some steps are slow steps, some are fast. Then we can find out of only slow steps, and the order of reaction or rate law is determined by slowest step of reaction. Molecularity, it is the total number of particles, total number of species colliding simultaneously to bring out chemical reaction.
Second point, order. Second point is molecularity. Molecularity is determined theoretically. Determined theoretically. Means on the basis of rate expression which is given. Third, it cannot be zero or fractional. And molecularity has no significance for complex reaction. Means molecularity is determined only for elementary reactions. Elementary reactions means which take place in single step, and it has no meaning or no significance for complex reaction. I hope it is clear to you. For which type of reactions order and molecularity have same value? Again related to this, what will be the answer? Elementary reactions. For elementary reactions, molecularity and order of the reaction will be same, because if reaction is complex, then few steps will be slow, few steps will be fast, and so it will differ. Order of reaction will differ from molecularity of a reaction. Now, order of a reaction may be zero, it may be first order, second order, third order, fractional order, and it may be pseudo first order reaction. So, question may be asked about pseudo first order reaction. Explain pseudo first order reaction. So, what is it? Pseudo means false, means reaction is actually higher order. If we look at the reaction, it is of higher order, but it follows the kinetics of first order. So, that reaction is known as pseudo. When a reaction of higher order, when a reaction of higher order follows the kinetics of first order, it is called pseudo first order reaction. So, when a reaction of higher order follows the kinetics of first order, it is called pseudo first order reaction. ऐसा कब होता है? It happens when one of the reactants is in excess, whose concentration does not change appreciably during the course of reaction. It happens when one of the reactants is in excess. It is in excess, so its concentration does not change appreciably. For example, hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester, hydrolysis of sucrose, these are the examples. Ester, CH3COO C2H5 plus H2O in slightly acidic medium, it gives acetic acid and ethanol. Here water is in excess. So, if we write rate equals to K concentration of ester into concentration of H2O. Since H2O is in excess,
is in excess, so its concentration remains almost constant. अगर थोड़ा बहुत water use भी हुआ है तो almost its concentration remains almost constant. So in that case, the rate K and H2O, this is constant, this is constant. The product of two is another constant, is replaced by another constant. So rate depends upon single concentration of ester. So it is first order, pseudo first order reaction. Here K dash is K into H2O. तो रेट देखने पे कितने रिएक्टेंट है? दो रिएक्टेंट है. So it appears to be second order, but actually it is first order because concentration, water is in excess whose concentration does not change appreciably during the course of reaction. यूज भी होता है तो थोड़ा सा यूज होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा ही दिखता है. सो द प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कांस्टेंट K dash, and rate of reaction depends upon single concentration term of reactant. So it is pseudo first order reaction. Pseudo means false. Now, what type of questions are generally asked? Question is, what is this? What is the question? A reaction is second order in A and first order in B. Means with respect to A it is second order and with respect to B it is first order. Write the differential rate equation. How is the rate affected on increasing the concentration of A 3 times? How is the rate affected when the concentration of both A and B are doubled? These are again important questions. These type of questions are asked. पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में. तो सबसे पहले तो पूछा है इन्होंने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है. फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. डिफरेंशियल इज माइनस dr अपॉन dt equals to K A to the power second order in A. So A to the power 2 and B to the power 1. So this is differential rate equation. Second is, how is the rate affected on increasing the concentration of A 3 times? So we can say rate R equals to K A to the power 2 B to the power 1. So if we increase the concentration of A 3 times, 3A to B1, then it becomes 3 square 9, 9K A square B1, which is equal to, so R dash is equals to 9R. K A square B1 is equal to R. So rate of reaction becomes 9 times. Rate of reaction becomes 9 times. Got it? Third part is, how is the rate affected when the concentration of both A and B are doubled? अब A और B दोनों की concentration को हमने double किया है, तो in this case के A की concentration भी 2A हो गई, 2A square, and this is 2B1. So R dash equals to 2 square is 4, 4 2s are 8. So it is 8K A square B, K A square B equals to R. So it is equal to 8R. So rate of reaction becomes 8 times. Rate of reaction becomes 8 times. Got it? Now we have discussed in the chapter there are integrated rate equations for zero order reaction and integrated rate equation for first order reaction, and generally question is asked for integrated rate equation for first order reaction. A first order reaction takes
40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half. Now what is the integrated rate equation for first order reaction? देखिए T is equal to 2.303 upon K log R naught upon R. This is integrated rate equation for first order reaction. Here T is the time, 2K is rate constant, log R naught is initial concentration, R is concentration left after time T. अब यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है बेटा, जब भी परसेंटेज में गिवन है तो उस केस में आप R नॉट को क्या लेंगे 100, इनिशियल अमाउंट कितना है 100. फॉर 30% डीकम्पोजिशन, रिएक्शन 30% डीकम्पोज हो गया, रिएक्टेंट 30% डीकम्पोज हो गया, 100 था, 100 में से 30% डीकम्पोज हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट, R इज इक्वल टू 100 माइनस 30, सो इट इज 70. आपको फाइंड आउट करना है T हाफ. अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें T हाफ और K में क्या रिलेशन है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K. तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, K की वैल्यू इसमें पुट करके देन वी विल कैलकुलेट T हाफ. सो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T. T कितना गिवन है, इट टेक्स 40 मिनट्स. सो टाइम हम यहाँ 40 में ही रख लेंगे, log R naught upon R. Put the values, 2.303 upon 40 log 100 upon 70. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, log 10 by 7 if we solve it, K is 303 upon 40, 10 by 7 log 2.303 upon 40 log, because they have in the question they have given us value, if 10 is divided by 7 it comes out 1.428 and they have given us the value, इन्होंने हमें वैल्यू दी है, log 1.428 की वैल्यू कितनी है 0.1548 और यू में टेक 0.155, सिंप्लीफाई कर सकते हो. इफ वी सॉल्व इट, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 8.91 इंटू 10 to the power -3 मिनट इनवर्स. अब K आ गया, अब आपको क्या निकालना है, T हाफ कैलकुलेट करना है. T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, T हाफ इज 0.693 अपॉन K, 0.693 अपॉन 8.91 into 10 to the power -3. If you solve it, it comes out 77.78 minutes. So half-life period for this is 77.78 minutes. What is half-life period? Half-life period is a time period during which concentration of a reactant is reduced to half of its initial concentration. Means वो time period जिसमें कोई भी reactant अपनी initial concentration का कितना reduce हो जाएगा 50%, half reduce हो जाएगा, वो time period क्या कहलाता है, half life period. And for first order reaction, half life period does not depend upon initial concentration of reactant and T half is 0.693 upon K. While for zero order reaction, T half is depends upon, it is R naught upon 2K, जो कि किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे. डिफाइन रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन. रेट कांस्टेंट इज K. The rate constant, this K is also known as specific reaction rate. तो अगर कहीं रेट कांस्टेंट ना पूछा जाए और उसकी जगह टर्म हो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तो मीनिंग इज सेम. देखिए कोई भी रिएक्शन है, इट इज रेट लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज R इक्वल्स टू K.
concentration of reactant raised to power n. N is order of the reaction, R is concentration of a reactant, and K is a. If concentration of a reactant is 1 mole per liter, concentration कितनी हो 1 mole per liter, then rate is equal to K. Now we can define rate constant of a reaction. Rate constant of a reaction is equal to rate when concentration of reactant is unity or 1 mole per liter. So we can write rate constant of a reaction is rate when concentration of a reactant is unity or 1 mole per liter. रेट कांस्टेंट के क्या खास बात है कि रेट कांस्टेंट जो है इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट. अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल ट्रिपल हाफ करें तो रेट चेंज होगी, रेट कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा. यस, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. एंड व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, that unit of a rate constant is different for different order of reaction, means unit of rate constant depends upon order of reaction. It is constant but its unit is not constant. Now for a reaction K is 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. वही चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी. जब इस टाइप के क्वेश्चन आए जहाँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और आपसे ऑर्डर पूछा है तो आपको केवल उसकी यूनिट को देखना है. किसको देखना है, यूनिट को. देखिए अभी हमने डिस्कस किया था R इक्वल्स टू के R टू द पावर n. रेट अगर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में हो रही है तो एक्चुअली रेट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड. कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, एंड दिस इज n. तो यूनिट ऑफ K क्या होगी, यूनिट ऑफ K इज मोल पर लीटर 1 minus n second inverse. If n is 0, unit of K is mole per liter per second. If you put n, if n is 1, order of reaction K is 1 minus 1 0, 0 is 1, it is second inverse. So they have given mole per liter per second, it means our answer is mole per liter per second. So answer is, it is first order reaction. If it is second order, n की वैल्यू 2 पुट करते हो आप, n इक्वल्स टू 2, तो K क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 minus 2 second inverse. So it is mole per liter minus 1 second inverse. So it is mole inverse liter second inverse. So but it is mole per liter per second. So our answer is first order reaction. Got it? Okay. Define activation energy of a reaction. अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, देखिए आपने पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ पढ़े होंगे, उसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में, if it is exothermic reaction we get this kind of plot. It is said according to collision theory
that reactant molecules, they collide, and during collision their old bonds are broken and the new bonds are formed. But reactant molecules, before converting into product, they form an intermediate and activated complex, and the energy corresponding to activated complex is known as threshold energy. क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी होनी चाहिए? इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी ET. दिस इज डिनोटेड बाय ET. अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी, अभी आप देख सकते हो ET से काफ़ी कम है, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. इसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी. व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy over and above average energy of reactants, to have energy equal to threshold energy. So ET is equal to EA plus ER. ER is average energy of reactants, ET is threshold energy. So जितनी एनर्जी और हम मिनिमम उसको प्रोवाइड करेंगे टू हैव एनर्जी इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. अगर एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की कम होगी तो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स इन अ शॉर्ट टाइम एंड द रिएक्शन रेट विल बी फास्ट. अगर एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है तो कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और हम कहते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज स्लो. इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है बेटा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या रोल? कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ न्यू पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी. कैटलिस्ट क्या करेगा? एक नया पाथ प्रोवाइड कर देगा जिसके लिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी. और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स एंड दैट विल बी वैल्यू ऑफ कैटलाइज्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो कैटलिस्ट कभी भी एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं करता है, वो एक नया रूट प्रोवाइड करता है, न्यू पाथ प्रोवाइड करता है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स हैव दैट एनर्जी एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो इतने कम टाइम में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. Now, as I told you that rate constant of a reaction, it depends upon the temperature. And on increasing the temperature of a reaction by 10 Kelvin, it is observed that rate of a reaction becomes almost double. Rate constant और temperature में जो relation था वो Arrhenius ने दिया था और उसको हम Arrhenius equation भी बोलते हैं. उसी पे बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं. The rate of a reaction quadruples means 4 times when the temperature changes from 293 to 313 Kelvin. Calculate activation energy of the reaction assuming that it does not change with temperature. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज log K2 upon K1, rate constant at temperature T2, rate constant at temperature T1, EA upon 2.303 R. बेटे फॉर्मूलेज अच्छी तरह याद रखने हैं. कई बार आप R यहाँ लिखना भूल जाते हो, तो पहले फॉर्मूला बिल्कुल आपको अच्छी तरह याद कीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए,
T2 minus T1 upon T1 T2. Here rate constant means K2 is 4 times of K1, quadruples 4 times हो रहा है. R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. T1 is lower temperature is 293 Kelvin. T2 is 313 Kelvin. Now substitute the values. So it is log 4 K1 upon K1 equals to EA 2.303 into 8.314, 313 minus 293, 330 T1 T2, 293 multiplied by 313. Log 4 equals to EA 19.147. इस वैल्यू को आप याद रख लीजिए. 2.303 इंटू 8.314, इससे आपका कैलकुलेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है. इंटू दिस इज 20 एंड मल्टीप्लाइड 293 and 313. If we multiply it, it comes out 91709. 91709. Log 4 is 0.60. EA 19.147 into 20 upon 91709, or EA is 0.60 into 19.147 into 91709 divided by 20. Remove it. 100, 23s are 60. If you solve it, then EA comes out 52678. It comes out 52678 joules, because we have taken R here 8.314 joules, so it is joules, and EA equals to and EA equals to 52.678 kilojoules. So these are some important topics of the chemical kinetics. Generally this type of questions are asked. I hope you are liking the channel, you are liking the lesson plans or the important questions which we have framed. So please write your comments and give us positive feedback so we can improve. And all the best for your board exams. Work hard. Thank you so much.